Hello students, welcome back to the Botaniverse. Previous video रे हमें यूनिट 1 कंप्लीट करथिले तार लास्ट थिला साइटोस्केलेटन. आज हमें स्टार्ट करबे यूनिट 2 जोटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ए सब कोन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो नेम्स. इज अ थीन quasi-fluid film-like structure present around the protoplasm. हमरा प्रोटोप्लाज्म माने कौन ना साइटोप्लाज्म. हम सेल भीतर प्रोटोप्लाज्म थाए ताकू किए सराउंड करके रखी थाए एक क्वासी-फ्लूइड फिल्म-लाइक स्ट्रक्चर जोटा होची कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. हमर प्लांट सेल एनिमल सेल बोथ रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थांती. Besides, the cell organelles and vacuole present in eukaryotic cell are surrounded by intracellular membrane system. The term cell membrane was coined by Nageli and Kramer in 1855. हमर जो सेल मेम्ब्रेन टर्म टा की कॉइन करथिले नगेली और क्रैमर केबे ना 1855 रे. Plasma lemma was termed by J.O. Ploy in 1931 and the plasma membrane used by D. Roberts in 1965. The plasma membrane and intracellular membrane constitute the biological membrane or biomembrane. Okay? Definition. Plasma membrane is a living, thin, elastic, semi-permeable membrane which surrounds the protoplasm of a cell. आमर जो प्रोटोप्लाज्म सेल रो जो प्रोटोप्लाज्म अच्छी ताको किए सराउंड करके रखी जे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोटा कि लिविंग, thin और elastic, semi-permeable membrane. Okay? What is the overview of membrane structure? The plasma lemma, okay, the plasma membrane or plasma lemma is mainly made of a phospholipid bilayer with embedded proteins, cholesterol and carbohydrates. ये जो plasma membrane टा हमरो कोथरु तयारी गोटे phospholipid bilayer रु तयारी माने plasma membrane टा ही गोटे phospholipid bilayer जोटारे कौन एम्बेडेड करके रखी से ना प्रोटीन्स कोलेस्ट्रोल कार्बोहाइड्रेट सब एम्बेडेड करके रखी माने ता भितरे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भितरे प्रोटीन्स कोलेस्ट्रोल और कार्बोहाइड्रेट्स माने अछंदी. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कोन फॉस्फोलिपिड हैव अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग माने जे वाटर को निज आड़ को अट्रैक्ट करे. वाटर फोबिक मीन्स वाटर फियरिंग माने जे वाटर को निजठू दूरेई दिए. ओके यार गोटे क्लियर स्ट्रक्चर देखिबा एटा भी फ्लूइड मोजाइक मॉडल भल भाव में बुझिबा जोटा कि नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा. एबे किंतु केवल स्ट्रक्चर देखि दियंतु. दिस इज द phospholipid bilayer means two layers. This is the two layers or not? This is the two layers. First layer, second layer. This is the head, this is the tail. Okay? They arrange into two layers. हमें देखिले दीटा layer with tails facing inward and heads facing outward. तार हमें देखिले कि नहीं tails टा केमती inward को face करके अच्छी और head केमती outward को face करके अच्छी forming a flexible barrier. Okay? Proteins. Integral proteins span across the membrane and may act as a channel or transporters. से जो integral protein माने phospholipid bilayer अच्छंदी सेटा channel और transporter act करछंदी. Peripheral protein are attached to the membrane surface and often serve as signaling or structural roles. दीटा टाइप रो प्रोटीन अछि गोटे integral और peripheral. Integral may act as a channel or transporter. अब हमर peripheral protein often serve in signaling or structural roles. Okay? This is the structure of proteins. This is the integral protein and this is the peripheral protein. Okay, peripheral protein टा बाहर लगी इंटीग्रल प्रोटीन टा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भितर लगी. ओके देखो दीटा लेयर भितर केमिति इंटीग्रल प्रोटीन टा भितर अच्छे. इंटीग्रल मीन्स कौन भितर एमती भितर को होगी अच्छी. आ पेरिफेराल प्रोटीन टा पेरिफेरी लगी. पेरिफेरी माने बाहर पेरिफेरी से लगी. ओके से पेरिफेराल प्रोटीन बोली कह जाउछि. कोलेस्ट्रॉल इंसर्टेड बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स. कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी स्पेशली इन वेरिंग टेम्परेचर्स. ओके आमर कोलेस्ट्रॉल कौन मेंटेन करे ना मेम्ब्रेन रो फ्लूइडिटी आउ स्टेबिलिटी. कार्बोहाइड्रेट्स अटैच टू प्रोटीन्स जोटा होछि ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स जोटा होछि ग्लाइकोलिपिड्स. ओके ऑन द आउटर सरफेस प्ले अ रोल इन सेल रिकॉग्नाइजेशन सिग्नलिंग एंड एडहेंशन. तापर कौन फ्लूइड मोजाइक मॉडल describes the membrane as a dynamic flexible structure where lipids and proteins can move laterally like boats floating in a lipid sea. Okay, fluid mosaic model विषय रे हमें नेक्स्ट वीडियो रे बहुत ही भल भाव पढ़िबा. एटा केवल तार ओवरव्यू. ओके
Now the function of plasma membrane. Protection. Cell membrane protects the cell from injury directly in animal cell and additionally in plant cell. ଆମର एनिमल सेल रे डायरेक्टली से इंजुरी की प्रोटेक्ट करे कि सेल मेम्ब्रेन बट इन प्लांट सेल एडिशनली प्रोटेक्ट करे कहीं सेल वॉल थाए ओके compartmentalization. The cell membranes make each cell a separate compartment having its own environment. माने सबु सेल रो निज निजर ओन एनवायरनमेंट अच्छी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर एनवायरनमेंट रो निजर ओन एनवायरनमेंट ओटे अच्छी ओके Similarly, each cell organelle has its own microenvironment due to the membranes. आमर सेल भितर सेल organelles माने अछंती सेही सेल organelles मानकर भी निजर माइक्रो एनवायरनमेंट अच्छी है से कंपार्टमेंट कर दउची सब गोटोटा अलग अलग कोठरी टाइप रो कर दउची जोटा कि निजर एनवायरनमेंट से माने निजे रखुछंती Selective permeability. The cell membrane selectively allows the movement of ions, molecules or solutes. को ions आसीबो को molecules आसीबो एटा किए सब देखुची सेल मेम्ब्रेन करूची ओके एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस मीन्स भीतर जिनसटा बाहर को जीवो एंडोसाइटोसिस मीन्स बाहर जिनसटा भीतर को आसीबो ओके through the membrane कहा द्वारा ना membrane द्वारा throwing out of waste product and secretory material occurs by exocytosis also through development of membrane vesicles okay endocytosis कोन bulk intake of material occurs intake means भितर को आनिबो endocytosis माने भितर को endo means भितर exo means बाहर okay माने भितर बाहर को जीवो endo माने बाहर भितर को आसीबो Cell recognition. Cell membrane can recognize foreign substances and defense against microbes. आमर जो किछि भी फॉरेन माइक्रोब्स की फॉरेन सब्सटेंसेस सब आसिले सेटा को सेल मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइज कर परिबो ओके आउ ता पई से डिफेंस भी कर परिबो माने हम सेल को बंचेबा पई से डिफेंस कर परिबो कि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज प्लाज्मोडेस्माटा एंड गैप जंक्शन आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन एडजेसेंट सेल आमे प्लाज्मोडेस्माटा गैप जंक्शन कौन बहुत भल भाव जाने आम सब पूर्व भिडियो देखीचे पूर्व भिडियो पढ़ीचे जी भी पढ़ी ना सी जाइए सांगे सांगे वीडियो देखंतु आपण बहुत भल भाव बुझिपारे सेल ऑर्गेनेल्स इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स डिलिमिटेड नंबर ऑफ सबसेलुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स दैट इज क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा membrane receptor cell membrane possess receptor co-receptor for immunoglobulins hormones neurotransmitters and other chemicals ପାଇଁ cell membrane ର receptor ସବୁ ଅଛି osmosis the phenomenon of osmosis is possible due to the cell membrane हमर जो osmosis phenomenon टा हुए सेटा कहा जो possible हे परछि ना cell membrane जो through which solute solvent pass okay in electron transport system ETS Enzymes of electron transport system are localized in the inner membrane of mitochondria. Mitochondria inner membrane रे ए electron transport system तर देखा जाए and thylakoid membranes of chloroplast. आउ chloroplast जो plant cell रो chloroplast तार thylakoid membrane रे ए electron transport system ता देखा जाए. Okay? So this is for today. Thank you for being a part of today's learning session. आशा करछे वीडियो आपनको नॉलेज को आउरी इंप्रूव करथिबो फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब परवर्ती वीडियो रे पुणी देखाबा ओके और जहाँ भी डाउट अछि प्लीज कमेंट करिया को भूलिबेनी थैंक यू बाय बाय